welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Industrial output growth falls 0.1% in March this year as compared to corresponding period of last year due to slowdown in the manufacturing sector. Domestic stocks declined for the 8th session. Sensex closes below 37,500 mark. Nifty ends under 11,300 level. And Brent crude prices rise a trade above $71 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में निर्माण क्षेत्र में मंदी से मार्च के दौरान औद्योगिक उत्पादन विकास दर गिरकर 0.1% रह गई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 8वें सत्र में गिरावट, सेंसेक्स 37,500 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी भी गिरावट से 11,300 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $71 प्रति बैरल के ऊपर दर्ज हुए। In our top story, industrial output growth (IIP) fell 0.1% in March this year as compared to the corresponding period of last year due to slowdown in the manufacturing sector. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, during the entire 2018-19 fiscal, industrial output witnessed a 3.6% growth as against 4.4% in the previous fiscal. Puneet, how do you look at these figures right now? There's in the background of a global recession because of the trade war going on between the US and China, with exports being hit hard. How do you explain the IIP figures right now? So Arjun, I think the IIP figures, the bulk, broadly they're in two categories. They comprise of manufacturing sector data and they comprise of the core sector data. Core sector is basically electricity, coal, cement, sectors like these, whereas manufacturing sector is more of an industrial sector that we know. What we've seen is that over the last many months, there has been a significant slowdown in the manufacturing sector. Because of a combination of things. First, of course, is the global environment, which is not very conducive to growth right now. We have seen slowdown in economic growth in even economies like China, which are really the engine of growth for global economy. So China has also slowed down a lot. We have seen some sluggishness in European economy. American economy, of course, was doing well, but globally, I think there are concerns about growth. On a domestic front, what we know is that in the last quarter, that is January, February, March of last year, government spending on infrastructure projects, largely that kind of slowed down significantly because of fiscal deficit concerns. So I think that is feeding into the economic data that we have received now. There was an empirical evidence to suggest that there was an economic slowdown in the last few months. I think these numbers just reflect that reality. What does this tell us about employment figures in the country, even though those figures are not available, but some kind of a hypothesis can be drawn? Arjun, unfortunately, I'll tell you, the employment figures have been politicized so much politics is swirling around these figures, that it is very difficult to make a fair assessment of what is the true data. Of course, in a country like India, where a very substantial part of the workforce is in the informal sector, because we have our largest employer in India is construction sector, which again the data is not collated properly. Similarly, in services sector, you will see a lot of people are self-employed and they are working in their own small businesses. So it's very difficult to get data on employment in India. But again, I would say that if you look at the broad figures, there is a sense that the employment generation is also sluggish. To some extent, we know that if manufacturing sector doesn't grow, then employment in formal sector suffers. So I think they're two related. These two are really, to some extent, linked with each other. And if there is an industrial slowdown, definitely employment generation will be sluggish. पुनीत, जिस तरह से आपने बताया कि जो औद्योगिक उत्पादन की जो विकास दर है वो थोड़ी सी धीमी हुई है या मंदी आई है उसमें, इसके क्या माने जाएं बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और देश की आर्थिक प्रगति के लिए, और एक आम आदमी सीधे और या अपरोक्ष रूप से कितनी तरह से इससे प्रभावित होने की गुंजाइश रखता है? देखिए,
इसको यदि बिग पिक्चर देखें हम, तो जो हम एक आम आदमी की आय, जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं, उसका ताल्लुक जीडीपी से है, क्योंकि टोटल जीडीपी जो देश का होता है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इज द पर कैपिटा इनकम। तो हम कोई भी देश खुशहाल तब होता है जब जीडीपी ग्रो करे। अगर जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है, यानी पर कैपिटा इनकम स्ट्रांग होगी लोगों की, तो वो उससे खुशहाली आएगी, इकोनॉमिक खुशहाली आएगी। जीडीपी के हमारे अगर देश के हम जीडीपी देखें तो उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसका एक कंपोनेंट है एग्रीकल्चर, विच इज अबाउट 15% ऑफ द जीडीपी, लेकिन वहाँ पर 65% हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें रोजगार पा रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी करीब 20 से 22% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी इन्वॉल्व है, और 50% से ज़्यादा हमारा जीडीपी जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो इसलिए यदि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखें और ये सोचें कि उसमें स्लो डाउन होने से क्या एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज ओनली अबाउट 20%। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में यदि मंदी आती है तो 65% जो जनता है उसको असर पड़ता है, जबकि जीडीपी में उसका इतना असर नहीं आता। तो दोनों का एक हमें ये देखना होगा कि ह्यूमन कॉस्ट क्या है, जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर बहुत छोटा पार्ट है हमारे जीडीपी का, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर जो है वो अभी भी ग्रो कर रहा है। जो लेटेस्ट डेटा है उसमें दे एटलीस्ट मेंटेनिंग देयर ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि एक मिली जुली पिक्चर है। भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, बहुत कॉम्प्लेक्स देश है। इसको हम एक ही बात से नहीं आंक सकते। इसको जितनी विविधताएं हैं, कहीं ना कहीं एक अगर चीजें में मंदी आती है तो कहीं ना कहीं दूसरा सेक्टर को संभाल लेता है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी जो प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट आदमी जो काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत हम स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं। और अभी तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, उसकी वजह से इकोनॉमी में काफी जोश था, टू सम एक्सटेंट ग्रोथ थी। अब पिछले जो क्वार्टर रहा उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी कटौती हुई है। तो इसकी वजह से शायद जिसका असर हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्योंकि कम रही पिछले क्वार्टर में, उसका असर है। क्या इसमें यह भी माना जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पिछले मौद्रिक जो टाइटनेस थी, तरलता, या जिस तरह से कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच जो था, उसका कुछ ना कुछ असर इस पे था? ब्याज दरों पे भी कुछ राहत इतनी बड़ी नहीं थी शायद जो उद्योग उम्मीद कर रहा था, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गैर संगठित क्षेत्र जो है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न कराता है, लेकिन शायद उसका चूंकि संपूर्ण जो आंकड़े हैं वो हमारे पास इकट्ठे नहीं हो पाते। फिलहाल हमारे पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या हम ये भी माने कि वहां पे भी सीधे तौर पे ना सही लेकिन परोक्ष तौर पे शायद कुछ ना कुछ कमी आई हो या मंदी आई हो? देखिए, मैं आपको अपनी निजी राय बताता हूं, बिकॉज ये बड़ा डिबेटेड सब्जेक्ट है कि इसके कारण क्या है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे पिकअप नहीं हो पा रहा बहुत ज्यादा। और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात करी या एग्रीकल्चर की बात करी, तो वहाँ जो मंदी है उसका क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017-18 में बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनेस करी, तो जो क्रेडिट फ्लो था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, स्मॉल बिजनेसेस को, उसमें बहुत असर पड़ा, बहुत स्लो डाउन आया और इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ाते चले गए 2017-18 में। देखिए, और भी बहुत कारण है, लेकिन जो पॉलिसी लेवल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता था कि वो ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो टफ होने वाली हैं, और दे कुड हैव फॉलोड एन इजी मॉनेटरी पॉलिसी। हमने दुनिया के हर देश में ऐसा देखा है। अमेरिका में हमने देखा है, जापान में देखा है, हमने यूरोप में देखा है, इवन चाइना जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है वहाँ पर, उसके बावजूद उन्होंने मॉनेटरी ईजिंग करी है, काफ़ी अग्रेसिवली करी है। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल किया था कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की जो क्रंच है या क्रेडिट फ्लो का जो क्रंच है वो बहुत हर्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उस समय में जो क्रेडिट क्रंच था उसका असर अब जाके सीधे तौर पे आंकड़ों पे नजर आया। देखिए, नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो हम पॉलिसी एक्शन होता है उसका असर 9 महीने या 1 साल के बाद हमारे सामने आता है। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीनों में अब लिक्विडिटी को ईज करना शुरू करा है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 हम देखेंगे कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर होगी। क्या इसमें एक चीज ये भी माना जाए, क्योंकि जब भी वो जो चुनावी मौसम आता है, चुनावी समय आता है, उसमें आमतौर पर सब चीजें बड़ी सधी हुई या एक सतर्कतापूर्ण तरीके से की जाती हैं, तो इस वजह से भी चीजें
थोड़ी स्लो हो रही हो, क्या इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए, कुछ हद तक जो पॉलिसी एक्शन है गवर्नमेंट का वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो गवर्नमेंट फैसले बहुत तेजी से नहीं ले सकती या उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती. डेफिनेटली इलेक्शन से कुछ देर पहले जो गवर्नमेंट एक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. और खासतौर से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के कुछ कंसर्न्स थे हमारे, तो जो लास्ट क्वार्टर रहा, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर रहा, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिससे डेफिसिट जो था वो कंट्रोल में रहे. उसका असर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स जो हमारे सामने आए वो सब थोड़े से मंदी धीमी है. Well, there is a Fiscal Responsibility and Budget Management Act that the government has to comply to ensure that the books balance and the fiscal deficit is not entirely out of control. Going back to my initial question about the conflict between US and China, the trade war itself. China has invited India for trade talks as well because quite a few exports from the US go to China, and maybe India can fill up some part of that trade as well. Do you see that as a boost to Indian business? Do you see that as bearing fruit? Do you see the contracts actually being negotiated along those lines? So interestingly, in fact, very recently I read a report by Goldman Sachs on the fallout of the trade war between US and China on other countries. So they've estimated that in the trade war between US and China, in fact, both these large economies will be losers to some extent, and the countries which will benefit from these include some European countries and India. And in fact, the estimate was that India's trade will probably grow by $15 to $20 billion purely because of the trade war affected items. So clearly, the trade war does not mean it's the same thing to everybody. It has different connotations for different economies. To me, of course, there will be a general slowdown in the global economy because of trade war, which is bad for everybody. But I think India is well positioned to take advantage, whether it is vis-a-vis the Chinese economy or vis-a-vis the European economy or even the US, because the US will have to replace some of those items. Our factory system also has to comply with global quality control standards as well. Do you see us rising to that level? One hopes so, because you would have read the recent news items that more than 200 US companies want to shift their manufacturing base from China to India, and they want to visit India, and I hope the new government is able to make good on these kind of opportunities. चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि आज शेयर बाजार में क्या हालत रही. बंबई शेयर बाजार में आज लगातार 8वें सत्र में गिरावट का दौर रहा और सेंसेक्स 0.3% की गिरावट से 96 अंक लुढ़ककर 37,463 के स्तर पर बंद हुआ. अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के बीच सेंसेक्स 37,500 के स्तर से नीचे रह गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% के नुकसान से 23 अंक गिरकर 11,279 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.2% की ही बढ़त बनाने में कामयाब रहा. Falling for the 8th straight day, the domestic stocks logged losses. The Sensex closed below 37,500 points, while the NSE Nifty ended below the 11,300 mark amid rising trade tensions between US and China. Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 96 points, a 0.26% to end at 37,463. The Nifty at the National Stock Exchange also slipped 23 points or 0.20% to settle at 11,279. The S&P BSE Mid Cap Index rose 0.24% and the Small Cap Index rose 0.21%. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On the BSE, 1,212 shares rose and 1,274 shares fell. A total of 166 shares were unchanged. Tata Steel was the biggest loser in the Sensex pack, tumbling 6.1%. Other losers included HCL Tech, Yes Bank, IndusInd Bank, TCS, ONGC, Bajaj Finance, Power Grid, Vedanta, Asian Paints, NTPC and Hero MotoCorp, which shed up to 4.1%. SBI was the top gainer, up 2.9%, I beg your pardon, after the country's largest lender reported a net profit of more than 838 crore rupees for the fourth quarter of 2018-19 on a standalone basis as non-performing assets declined. Bharti Airtel, ICICI Bank, HDFC Twins, Axis Bank, Kotak Bank, Mahindra & Mahindra and Tata Motors too ended in the green, rising up to 2.1%. Among the sectoral indices on the BSE, the S&P BSE Metal ended down 1.5%. IT fell 1.1% and oil and gas was down around 1%. While consumer durables index ended up 1.5%, telecom added 0.8% and Bankex gained
0.43%. Puneet, let's look at the trading pattern right now. Even though traders have taken advantage by profit booking, but there has not been any short covering. Has there been continuous short selling at this stage? In the last 1 week or so, we've seen, in fact, you mentioned that this is the 8th straight day of losses for the markets, and very steep losses. In fact, Nifty during the week fell by almost more than 500, almost 500 points, which is very steep, almost 4%, 4.5% within a week. And all the heavyweights, the Reliances and ITCs and HDFC Bank, all these stocks fell during this period. So clearly, we saw that the markets took a hit, and the sentiment and the headline numbers was really weak. I think it has a lot to do with the global sentiment right now, and also at the same time we find that there are domestic factors, uncertainty relating to elections, which is making people wary. And like you said, there has been some profit booking, some short selling by people who think there's an opportunity to make money in the short term, and not much buying really right now. How do you look at the market in the coming days till the election results are declared? Do you see the same short selling pattern to continue, with traders taking advantage of a downward spiral of the market, even though it is not as sharp as, say, a substantial loss for the stock market? Absolutely. So what we've seen is that the markets haven't fallen very sharply on any given day, but they have continuously slipped, by about 1% every day. So it's which is very, very large actually. But I think going forward, a lot of these positions will have to be covered ahead of the elections, because election outcome is something which markets are wary of. They don't want to bet on the election outcome results, most traders, and therefore I think there will be profit booking, there will be some kind of a short covering going forward. In short, what we can see is that there's going to be a lot of volatility in these markets, at least for the next couple of weeks. Let's look at the corporate results now with the earnings season on. Today, many companies and banks declared their fourth quarter results. Infrastructure major Larsen & Toubro today reported a 7.9% rise in its consolidated profit after tax at around 3,418 crore rupees for the quarter ended March 2019. Country's largest lender SBI Friday said it has reported a net profit of around 838 crore rupees in the fourth quarter on a standalone basis as non-performing assets came down. Allahabad Bank reported a widening of net loss to around 3,834 crore rupees during the fourth quarter of the 2018-19 financial year due to mounting bad loans. Syndicate Bank reported a profit of around 128 crore rupees for the March quarter of 2018-19. On a modest rise in core income and slight improvement in bad loan ratio. State-owned Canara Bank said its net loss narrowed multifold to around 552 crore rupees for the fourth quarter of the fiscal 2018-19, mainly driven by lower provisioning for bad loans. Puneet, now that the results have been read, especially for the public sector banking, we find that State Bank of India has been the best controlled and directed bank when it comes to reducing its losses and ensuring that NPAs also decline. But we're not seeing the same pattern across the other banks. पुनीत, एक चीज और मैं इसके पहले कि आप अपना जवाब दें, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से अर्जुन ने कहा कि जिस तरह से स्टेट बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त किया है, बाकी जो बैंक्स हैं जैसे इलाहाबाद बैंक है, सिंडिकेट बैंक है या केनरा बैंक है, इन्होंने भी अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने की जो कवायद की है, उससे उनका जो शुद्ध घाटा है वो कम हुआ है, या अभी भी कहीं ना कहीं प्रबंधकीय या मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं उसके में अभी भी कमियां हैं जिसको और दुरुस्त करने की जरूरत है? ये जरूर बताइए। देखिए, तो बैंक्स के जो फिगर्स हम देखते हैं, जैसे हम नेट प्रॉफिट की या नेट लॉस की फिगर देखते हैं, तो वो अपने आप में पूरी कहानी बैंक की नहीं बताती। आपने सही इसका जिक्र किया कि बैलेंस शीट बैंक की क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, मैं इस बारे में इसको सेक्टर को देखता भी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो बैंकिंग पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो मुझे लगता है कि उनकी बैलेंस शीट्स पिछले एक साल में बहुत बेहतर हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट एनपीए, जो अब उन्होंने क्वार्टर अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, नेट एनपीए जो है वो 3% के आसपास आ गया है, विच इज एज गुड एज एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो कैपिटल एडिक्वेसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो 12%, करीब 13% पहुंच गई है। इसी तरह इलाहाबाद बैंक ने, हालांकि उन्होंने इस क्वार्टर में लॉस डिक्लेयर करा है, फैक्ट ये है कि उन्होंने बहुत बड़ी प्रोविजनिंग करी है और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को बहुत सुधारा है। जो प्रोविजन कवरेज रेशो हम कहते हैं कि बैड लोन्स को कितना उन्होंने प्रोवाइड किया है, वो 80% उन्होंने पहुंचा दी है। इसी तरह सिंडिकेट बैंक है या कैनरा बैंक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि
बैंकिंग क्षेत्र की जो हालत है, बट एंड वी फॉलो व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है बैंकिंग में, जो एक समय पर 10% से नीचे थी, यानी 7-8% थी, वो अब करीब करीब 14% आ गई है। इसका महत्व इसलिए ज्यादा होता है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ती है बैंक्स की, वो ज्यादा लोन दे पाते हैं। यदि कैपिटल एडिक्वेसी कम होती है बैंक्स की, तो लोन नहीं दे पाते आगे। तो मुझे लगता है बैंक्स के लिए आने वाले समय में क्रेडिट देना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि सब बैंक्स की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हमने देखी है, वो अब काफी हेल्दी होती है, तकरीबन दोगुनी हो गई, 7 से 14% 12% से 15% के दरमियान है जी। अब एक चीज और, जिस तरह से लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के भी जो रिजल्ट्स हैं, बहुत संक्षेप में आपका चाहूँ, क्योंकि एक काफी बड़ी कंपनी है जो खासतौर पर ढांचागत क्षेत्र में सेवाएं देती है। पीछे आपने भी बताया कि जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है रोजगार देने में और जीडीपी के आंकड़ों को दुरुस्त करने में। तो इस तरह से ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? क्या उम्मीद की किरण अभी जो है वो इतनी धूमिल नहीं हुई है? और जिस तरह से कि अर्जुन ने भी जानकारी दी कि अमेरिका चीन का जो व्यापार युद्ध है वो कितनी बड़ी संभावनाएं लेकर आया इस क्षेत्र में भी। देखिए, एलएनटी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छी, एक मुझे लगता है कि एक मैसेज देते हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो ग्रो कर सकती हैं और बहुत अच्छे प्रकार से ग्रो कर रही हैं। हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं उनके सामने। एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करती है और हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां भी काफी नुकसान भी कर रही हैं और काफी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। लेकिन एलएनटी जैसी जो बिल्कुल प्रोफेशनली रन कंपनी है, वो बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा है। और हमने अभी देखा उन्होंने आईटी अपना माइंड ट्री कंपनी को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में वो अपना ग्रोथ करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है भारतीय कंपनियों के लिए कि प्रोफेशनल रन कंपनीज किस प्रकार से डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकती हैं। नजर डाल लेते हैं रुपया पे। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती से 69 रुपए 91 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। रुपए में बहुत दिनों से ज्यादा बड़ी हलचल तो नहीं है, लेकिन तकरीबन अभी भी 70 रुपए के आसपास बना हुआ है डॉलर के मुकाबले। कितना दबाव मानते हैं, या फिर ये भी कहीं ना कहीं इसको भी कहना चाहिए कि चुनावी जो बादल हैं जब तक वो छटेंगे नहीं, नतीजे सामने आएंगे नहीं, तब तक शायद इस तरह से ही ढीला ढालापना रवैया रहेगा? तो देखिए, करेंसी के लिए दो ब्रॉड ट्रेंड्स होते हैं। तो फंडामेंटल जो वैल्यूएशन होती है करेंसी की, और एक सेंटिमेंटल, यानी जो उसके आसपास जो वॉलेटिलिटी कह सकते हैं या थोड़ा बहुत पेंडुलम का हिलना डुलना जिसे कह सकते हैं, वो रहता है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि रुपए की कीमत 70 रुपए टू द डॉलर के आसपास स्थिर है, काफी स्टेबल है। इलेक्शन रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे आते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट आने का संभावना बढ़ती है, तो डेफिनेटली रुपया मजबूत हो सकता है। और लेकिन यदि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर थोड़ी क्लैरिटी नहीं होगी तो रुपये में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। पर मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ समय तक रुपया जो है वो काफी स्टेबल रहेगा। 70 रुपीज प्लस माइनस 1 और 2 रुपीज आप मान सकते हैं। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर मजबूती का दौर रहा। सिंगापुर का स्ट्रेच टाइम्स 0.1%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 3% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्के में 0.3% की गिरावट रही। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.5% से 1.1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock market, US stocks tumble amid meeting between the US and China that could decide the fate of a long-awaited trade deal. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 declined 1%, while the Nasdaq Composite Index plunged 1.2%. One gets the impression that maybe the trade war has been factored in by the stock markets, both in the US and China. But it seems that every time there is an encouragement of a trade deal, after negotiations, it tends to fall apart, and then they once again try to rebuild the whole situation. So, what is actually going on, and are they actually going to arrive at a trade deal? So, these trade talks between US and China, they really have been swinging from one end of the spectrum to the other. In fact, yesterday, and day before yesterday, in fact, the US president really came out with a surprise announcement saying that they're going to raise tariffs immediately. Then, when the markets were doing very badly, and I was just following it on live trading in US, and then we observed that it was down 500 points, and suddenly US president again came out with a statement saying that there's a possibility of a trade deal. It's just as volatile.
and it from minus 500 points, the Dow Jones Industrial Average recovered almost 500 points. So of course markets are really swinging to the tones from politicians and leaders on both sides of the divide. I think it will take some time before markets stabilize on this account. Usually markets get tired of such swings waiting for a deal to happen, but I think a US-China trade deal is really up in the air. We don't know whether it's happening or not. Markets are of course volatile following the fate of this deal. Well, let's look at the oil market now. Oil prices today rose even as the start of US President Donald Trump's tariff hike on $200 billion of Chinese goods kept tensions high in the trade dispute between the world's two biggest economies. Brent crude prices in intraday trade were trading around $71 per barrel. WTI prices were at around $62.10 per barrel when reports last came in. Well, the story does not tell you about whether a supply has been cut or not to shore up prices, but there appears to be a decline in consumption from the story itself. How do you see this tariff hike impacting oil prices in the future? So Arjun, oil prices are really responding to a host of factors right now. On one hand, we have supply constraints, which is creating shortages and upward pressures on oil prices. At the same time, because of trade concerns, the consumption could come down significantly, and we could see oil prices come down. So oil markets are really volatile in the sense that they're responding to many variables right now, and none of those variables we are able to kind of forecast or predict what is going to happen. So I think we are again waiting for the economy to settle down, for the news dust to settle down on this trade talks, and only then we will know where the oil is headed. If in case trade concerns aggravate, I think oil could really take a hit. You have two types of contracts, spot and forward contracts. Spots are obviously more expensive than the forward contracts. So how are nations right now strategizing about at what price to buy it in the forward market itself, like India, so that their fiscal deficit does not balloon? So of course we have a strategy, and there's in fact a whole mechanism which has to balance between futures and spot prices, and they vary a lot actually. It depends on freight charges, and there are many political factors which play into it. India typically has a basket of oil which they buy from different countries, and then they try to balance that basket oil, the price basket. In India, what we've seen is that we have managed to keep oil prices, our purchase prices, somewhat modest, but because of Iran sanctions, India has a challenge ahead of it, because we are looking to buy from variety of sources, new sources actually. So I think oil is again a very, very complex commodity. It's political, it is economic, it has to do with geographies. It's a very, very difficult commodity to forecast. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना स्टैंडर्ड 32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी 380 रुपए की बढ़त से 38,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली बढ़त से $1,285 प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा, जबकि चांदी भी बढ़त से $14.86 प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में सोना की चमक अब इस परिस्थितियों में कितनी मजबूत नजर आती है, क्योंकि तकरीबन $1,300 के आसपास आ गई है। हम शायद $1,100 से आसपास इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वही एक सेफ हेवन कमोडिटी है। जब भी कुछ कंसर्न्स होती है इकोनॉमी को लेकर, ट्रेड टॉक्स को लेकर, तो हम देखते हैं कि सोने में थोड़ा उछाल आता है, और फिर पर यदि हम देखें पिछले 2-3 या ज़्यादा 5 वर्षों को भी, तो वो करीब करीब इसी लेवल पर स्टेबल रहा है गोल्ड। पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Closing headlines in English. Industrial output growth falls 0.1% in March this year as compared to corresponding period of last year due to slowdown in the manufacturing sector. Domestic stocks decline for the 8th session. Sensex closes below 37,500 mark. Nifty ends under 11,300 level. And Brent crude prices rise to trade above $71 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.